students of class 9. Welcome to connect this class, please. Today we will discuss our portion quadrilaterals. We have studies about quadrilaterals in previous classes also. Here we will try to review about quadrilaterals, types of quadrilaterals, and so on. So we see what is a quadrilateral. Our first question, what is quadrilaterals? So quadrilateral is a plane figure. Quadrilateral is a plane figure bounded by 4 line segment. Okay, you have a studies. Quadrilateral is a plane figure bounded by 4 line segment is called a quadrilateral. Here in this figure, ABCD is a quadrilateral. Why? Because it is bounded by 4 line segment. It is a plane figure. There are 2 पेज है ना. क्या है ये प्लेन फिगर है ABCD. दूसरा इट इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट. 4 लाइन सेगमेंट there is AB, BC, CD and DA. So ABCD is a quadrilateral. Okay, and here A, B, C and D है ना. ये 4 क्या है? As we know, A, B, C, D are ये vertices है ना. A, B, C, D are ये क्या है? vertices है. तो इस तरीके से क्या हो गया? There are 4 vertices in a quadrilateral. Okay, and similarly क्या है? 4 angles. If you denote by single points, angle A, angle B, angle C, angle D, there are 4 angles in a quadrilateral. Okay, now we write by taking 3 points है ना. Then we write D. Please see only a figure. Then we express है ना. Next step. So D A B, one angle. There is no doubt. Again A B C, second angle, and B C D, ये third angle, and C D A, ये 4 angle. There are 4 angles. How many sides? There are 4 sides है ना. A B, B C, C D, D A. There is no confusion. So A B, B C, C D, D A are sides. So we have known there are 4 vertices, 4 angles and 4 sides. Okay, and if you join AC and BD
you get there are two diagonals AC and BD. Means there are two diagonals in a quadrilateral. Now here see opposite angles and opposite sides. Opposite angles, two angles having no common sides. Two angles such as angle A, angle C are opposite angles. है ना? Angle A है, it has two arms AB and AD. Similarly, angle C has two arms BC and CD. There is no common, no any common. Okay? So two angles having no common arms is called opposite angles. Similarly, angle B and D are opposite angles. So आप कह सकते हैं कि there are two opposite, there are two pairs, sorry, there are two pairs of opposite angles in a quadrilateral. Okay. Similarly, opposite sides, here we see AB, DC. क्या देख रहे हैं आप? Two sides having no common end point, है ना? Two sides AB and CD having no common end points. So these two sides is called opposite sides. Similarly, AD and BC are opposite sides. So there are two pair of opposite sides AB and DC, AD and BC. अब ध्यान देना है, नेमिंग क्वाड्रिलेटरल का चेंज होगा तो उसमें ऐसा नहीं है कि वहां AB या DC रहेगा, है ना? यहां ध्यान देना है, यहां इस फिगर के अकॉर्डिंग है, फिगर का नेमिंग अगर चेंज होगा तो उसमें ये कंसेप्ट हमको रखना तो है ना? Two sides having no common end points as called opposite sides, है ना? Opposite angles, opposite sides हो गया. Then है adjacent angles and adjacent sides. Adjacent means होता है संलग्न, जुड़ा हुआ, है ना? तो two sides having a common point. Two sides, that is a concentrate in figure AB and AD. If we be taking AB and AD, we see A is a common point. Okay? AB and AD having a common point A. So pair of AB and AD, ये क्या होगा? Pair of adjacent sides. Sorry, ये adjacent sides हो गया, है ना? AB and AD. So two sides having a common point is called adjacent sides. अब तो similarly इसका एक पेयर हो गया. सेकंड पेयर हो जाएगा AB and BC having a common point B. So AB and BC another pair of adjacent sides. BC and CD third pair of adjacent sides. CD and DA. इस तरीके से there are four pair of adjacent sides, है ना? Two pair of opposite sides, two pair of opposite angles, four pair of adjacent sides. Angles का concept देखिए. Here we see angle DAB. By taking a single point, angle A, angle B. देख रहे हैं ना? तो two angles, angle A and B, having a common arm. Two angles, angle A and angle B, having a common arm AB. So ये क्या है? Adjacent angle. ये पेयर जो हो गया, पेयर ऑफ adjacent angles. Angle A and angle B.
सिमिलरली एंगल बी एंड सी, है ना, बिकॉज ये बी सी इज कॉमन आर्म्स, एंगल सी एंड डी, एंगल डी एंड एंगल ए। सो देयरफॉर क्या होगा, देयर आर 4 पेयर ऑफ adjacent angles of a quadrilateral. Okay, and two here AC and BD are diagonals. You will study, है ना। So इस तरीके से this is the, ये क्या हो गया, ये quadrilaterals के बारे में हमको इतना ये जानना है ना। ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, फिर यहाँ एक बार उसको रिव्यू करें, है ना। ऐसे मैं इसके पहले जो क्लास लिया था स्टडी, ये तो उसमें कहा था कि नेक्स्ट चैप्टर हम क्वाड्रिलेटरल्स स्टार्ट करेंगे, उसमें जो हम लोग पढ़े हैं उसको रिव्यू कर लेंगे। तो यहाँ एक तरीके से रिवीजन कर रहे हैं। अब इसी को हम लोग लिखेंगे इतना ही, ये क्वाड्रिलेटरल है ना। क्वाड्रिलेटरल ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय four line segment is called quadrilateral. Okay, a plane figure bounded by 4 line segments is called quadrilateral. In figure A, B, C, D is a quadrilateral है ना। In figure A, B, C, D is a quadrilateral. There are 4 vertices, 4 sides, 4 angles and 2 diagonals, है ना। अब देख लीजिए इसमें वर्टिसेस, है ना। ये वर्टिसेस इसमें क्या है, ए बी सी, है ना, एंड डी आर 4 vertices in a quadrilateral ABCD, है ना। इस तरीके से ये क्या है, 4 vertices होंगे इन एनी quadrilateral. सेकेंड, एंगल्स, एंगल कितने हैं, अपोजिट साइड्स, है ना। 2 sides having no common point, है ना। 2 sides having no common point is called opposite sides of a quadrilateral,
है ना। In the given figure, AB and DC, AD and BC, है ना, there are two pair of opposite sides, two pair of opposite sides, है ना, AB and DC, AD and BC. Okay. Similarly, ये opposite angles, two angles having no common arms is called opposite angles of a quadrilateral. Okay, in the given figure क्या है, एंगल ए एंड एंगल सी, है ना, ट्रिपल पॉइंट लेकर के पहले ऊपर लिखा गया है एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल डी. There are two pair of opposite angles, है ना, two pair of opposite angles. Okay. Now we see adjacent sides and, है ना, adjacent sides of a quadrilateral. Two sides having a common point, है ना, two sides having a common point is called adjacent sides, pair of adjacent sides, है ना, called a adjacent sides. In figure, in the given figure, AB and BC, है ना, BC and CD, CD and DA. There are four, है ना, four pair of adjacent sides, है ना, 1 2 3, oh sorry, AB BC, BC CD, CD and DA, and again one छुटा हुआ है DA and AB,
ओके, है ना? ए बी, बी सी, बी सी, सी डी एंड सी डी, डी ए एंड डी ए बी. There are four pair of adjacent sides. है? Now see, adjacent adjacent angles. Two angles having no common arms is called adjacent angles of a quadrilateral. Okay, we see in this in the given figure, angle A, angle B, angle B and angle A and angle B, angle B and angle C, angle C and angle D, angle D and angle A. There are four pair of adjacent angles. ओके, टू डायगोनल्स हम लोगों ने लिखा है ना? तो आज इतना ही. इसको हम लोग लर्न कर लेंगे. पहले भी ऐसे ही ये पढ़ा होगा, ध्यान में होगा, है ना? पुनः जो है अगेन जो है इसको रिवीजन कर लेंगे, याद कर लेंगे. इसके बाद हम लोग प्रिपेयर होंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना? क्योंकि उससे रिलेटेड हम लोग को थ्योरम बाद में सोल्व करना है. तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.